Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are in class 11th and the topic for today is air pollution. And we read about environmental education, then how it is being polluted and what are the impacts adverse on living things. Today's topic is most important as per the environment is concerned. Today we are going to discuss air pollution. As you know, air is very essential for all living things. Without air, no living thing can exist. We can live for few days without food and water, but without air, not in minutes. So, the essential thing here is to prevent our atmosphere and our this air from pollution, to make the precautionary measures to prevent our this air from pollution. आपको मैं एक बात बताऊं कि हम जो ग़िज़ा लेते हैं पूरा जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना बनाने के लिए, उसकी मिकदार जो है पूरी मिकदार करीब 21 किलो की है और उसमें से जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में चला जाता है वो करीब 17 किलो के करीब है। पानी 2 किलो और जो बाकी ग़िज़ा है वो सिर्फ 1-2 किलो के करीब। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है अल्लाह की तरफ से, हवा और पानी, अगर हम इसका इस्तेमाल मिनटों या दिनों में नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेजान हो जाएगी, पत्थरों की तरह मुर्दा हो जाएगी। इसके बरक्स सिर्फ 2 किलो के लिए हम इतना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रिश्ते नाते तोड़ते हैं, लेकिन उन 17 किलो के लिए, 18 किलो या 19 किलो के लिए हमारी कोई कदर नहीं है। होनी तो चाहिए थी, क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक वाक़ा सुना कि एक बुजुर्ग इंसान जिसको शायद कोविड-19 का ही कुछ प्रॉब्लम था, तो जब उसको हॉस्पिटल में लिया गया तो उसे ऑक्सीजन दिया गया। अब जब उसकी जान बच गई तो उसको बहुत पैसा उस पर खर्च आ गया, तो बहुत रोने लगा। तो जब वो रो रहा था तो किसी ने उसे कहा कि आपको तो शुक्र मनाना चाहिए, आपकी ज़िंदगी बच गई, अब रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा नाशुक्रगुजार हूँ, मेरी उम्र 75 साल की है, इन 75 साल में मैंने कितनी हवा पी होगी कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया मैंने, और वो किसकी तरफ से थी कभी मैंने उसका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। लेकिन आज मैंने चंद घूंट पिए
اور مجھے پیسہ جتنا بھرنا پڑا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن چند بوٹ کے لیے میں نے اپنی پونجی جتنی بھی تھی میں نے وہ خرچ کی، صرف کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کے لیے، لیکن افسوس اس بات کا ہے مجھے کہ جس نے مجھے اتنا کوئی دیا ہے اس کا مجھے شکر گزار، تو اس کی شکر گزاری سے سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم جو آنے والی نسل ہے ان کے لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ میر درد کا شعر ہے نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، تو درد دل یہی ہے کہ ہم جو اس وقت رہ رہے ہیں we should not pollute our this beautiful earth so that the coming generation will not face any kind of problems. So what are the causes behind this air pollutions are, the number one is industrial process, mushroom growth of industries. What comes out in terms of smoke that pollutes the air, and this is first thing which is being used, because the whole world it has turned money lusted, power lusted, and the power lust makes human beings so crazy, so greedy that he is using such a kind of things which are very much harmful to our earth and for us. Another thing is combustion. So combustion, industrial and domestic combustion is another source of smoke, dust and sulfur dioxide. The third one is motor vehicles. دوڑ لگی ہے آج، باپ کو گاڑی ہے بیٹا بھی رکھنا چاہتا ہے، بھلے ہی چاہے اس کو سود کے دلدل میں کیوں نہ پھنسنا پڑے، لیکن گاڑیوں کا جو مشروم گروتھ ہے، جو ان سے دھواں نکلتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس نے ہمارے ایئر کو پلیوٹ کیا ہے. ہیومن ویسٹ. I was at Hyderabad and one of my teacher told me how much waste is coming from your home daily. When I told him, sir, it would be not more than half kg a day, he was surprised. He said, oh, very good, but here it is in tons. So wastage jo hai, these two pollutants, because we are putting the wastage outside. Sometimes we burn it, sometimes we put it in the water, and when this جب باپ چڑھتا ہے نا تو جب گرمی لگ جاتی ہے تو وہ ہوا میں اس کا جو اثر ہے، جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ہوا میں چلی جاتی ہے، تو اس طرح سے بھی ہمارا جو ہوا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. Density of population, which is another thing. Density. You have cities. Now villages too, they are very dense. Population is density, and these are the causes responsible behind our air pollution. Now how to control it? How to control? The main thing is plantation. Plantation is very good. It can maintain the balance in the air, because we need atmosphere, we need carbon dioxide, nitrogen. This is a combination of this air which is needed by human beings, animals, and this is only possible when we have a balanced environment. تو اس کے لیے plantation جو ہے that is very much essential. Good quality of fuel. When we use the fuel which is being used, it should be a good quality. Another one is minimum the automobile. جو automobiles ہیں ان کا جو تعداد ہے ہم کو اس کو minimum کرنا چاہیے. You see nowadays traffic jam is there. It is because of this, and there comes a smoke. When we are driving our vehicle, if we are stopping our vehicle, we should off our vehicle so that
the smoke will not come out. Another thing is that replacement of conventional fat. तो हमने जो फ्यूल है इसकी रिप्लेसमेंट करनी है. Electricity is there, natural gas is there. If we will make use of such things, we can save our air, and we can save our air from getting the polluted. Finally मैं इतना कहूँगा कि हमने खुद ये सब करना है. अगर हम अपने आप से शुरू करेंगे तो ये जो हमारा माहौल है ये बहुत हद तक ठीक हो सकता है. So the main thing here that is air, and air should not be polluted, and then such things if we will adopt, we will make use of these things, we can minimize the pollution of air. Thank you for today.